Good morning, students. Today we will start exercise 4.5. In this exercise, first question is we have to draw a square. Read with RE equal to 5.1 centimeter. Now we know that each all of the sides of a square are equal. It means all the four sides will be of 5.1 centimeter. Also we know that each angle of a square is 90 degree, so this angle and this angle will also be of 90 degree. Now 5 dimensions you know, so you can uniquely determine this square or uniquely draw this square. So for this, first of all we draw a line segment of length 5.1 centimeter. Now at R and E, at E draw an angle of 90 degree at any point at R or either at E. So let us draw at E an angle of 90 degree. Then you can increase the radius and mark two arcs, one from here and one from here. I am marking point on these two points so that you are able to understand from where you have to draw the arcs. Then join it with this and mark it X. This is R, this is E, 5.1 centimeter. Now from EX you have to cut off 5.1 centimeter again. So measure 5.1 centimeter in your compass and mark an arc. This point will be A point, and from here also you have to draw an arc of same radius 5.1 centimeter, and from A also you have to draw an arc of 5.1 centimeter. Change over here. It will be here, not here. Then join the points. A and R. This point will be D. So this is our required square, 5.1 centimeter, 5.1 centimeter, and this is also 5.1 centimeter. Now you can write the steps. The first arc was wrong, so I have drawn it again. Now steps. First step is draw RE equal 5.1 centimeter. Second step is at E draw angle REX equal 90 degree. From EX cut off EA equal 5.1 centimeter. Then at from R and A draw arcs of radius 5.1 centimeter to intersect each other at B. Then join RD and
80. Next question is, you have to draw a rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter. So first we make the rough figure. The length of the two diagonals, total length of the two diagonals is, one is of 5.2 centimeter, this hole, and this hole is 6.4 centimeter, complete. Let us name this as ABCD. So we know that the diagonals of rhombus bisect each other at right angle. Diagonals of rhombus bisect each other at right angle. So OB and OD is half of 6.4. OB and OD is half of 6.4. सो डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.2 सेंटीमीटर आएगा. ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी किया है. तो अब हम इसके लिए सबसे पहले AC डायगोनल ड्रॉ करेंगे विच इज ऑफ 5.2 सेंटीमीटर. This is 5.2 centimeter. Now from A and C, mark arcs above and below to draw the perpendicular bisector of AC. AC का perpendicular bisector draw करने के लिए more than half of AC रेडियस लेंगे और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे. इसी तरह से C पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और आप इसे आपस में डॉटेड लाइन से या कंप्लीट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं. अब हमें इस डायगोनल में से 3.2 ऊपर कट करना है, 3.2 नीचे की साइड कट करना है. तो टेक द रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर and mark an arc above and mark an arc below. So this is 3.2 centimeter from here to here. Similarly, ये आपका पॉइंट B आया है, ये पॉइंट D आएगा जहाँ आपने नीचे वाला आर्क लगाया है, and this is also 3.2 centimeter. Then join AD BC and AB. When you draw the arcs of perpendicular bisector, take bigger radius so that these two arcs do not coincide. तो थोड़ा बड़ा रेडियस लेके ये ऊपर वाले आर्क लगाएंगे जिससे कि आपके पास इन दोनों आर्क्स के बीच में गैप आ जाए और आपकी जो फिगर है वो क्लियर हो. So this point is D and this is suppose X and this is suppose Y. Now steps. First step is draw AC equal 5.2 centimeter. Second step is draw XY, the perpendicular bisector
or AC, intersecting AC, this point is O, intersecting AC at O with O as center and radius 3.2 centimeter. Draw arcs above and below AC to intersect XY at D and B. Then finally join AB, BC, CD and AD. That's all for today, and now you complete the exercise. Third and fourth. In third question, you have to draw the rectangle. You can easily draw. Two sides are given, and you know that each angle is 90 degrees. So likewise, here you can draw one side 5 centimeter. This is 4. This is 4. This is 4. 5. So पहले 5 सेंटीमीटर लाइन खींचिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए, उसमें से 4 सेंटीमीटर कट करिए, फिर यहाँ से फिर 4 सेंटीमीटर और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क आप ड्रॉ करेंगे. And in the fourth question, you have to draw the parallelogram, but here only two sides are given and no angle is given. So in this you cannot draw the unique parallelogram. तो एंगल आप अपनी मर्जी से कितना भी लीजिए. पहले आप एक साइड ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम के लिए. तो जैसे आपने सपोज ये साइड ड्रॉ करी है पैरेललोग्राम के लिए, अब आप इसकी में एंगल आप कितना भी लीजिए, चाहे आप 120 लीजिए या 110 लीजिए या 90 लीजिए या जो भी मर्जी एंगल है, और उसमें से आप 4.2 सेंटीमीटर कट करेंगे. फिर इस अकॉर्डिंगली आप ये एंगल बाहर वाला लेंगे, जितना आपने ये लिया उतना ये लेंगे, या 180 में से इसे सब्ट्रैक्ट करके उतना एंगल यहाँ लीजिए. आप इसे 120 लीजिए तो बेटर रहेगा. 120 ड्रॉ करना भी इजी होता है और 60 भी ड्रॉ करना आसान होता है, क्योंकि 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, और फिर आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक यू बेटा.